धर्म जी आपके किसिंग सीन के बारे में पूछ रहे हैं। यू एंड शबाना जी थोड़ा सा। कैप्टन ने सब कुछ बता दिया। कैप्टन अच्छा हो तो टीम खूब खेलती है फिर। और ये कहता है कि 5 साल बाद आया हूँ करण, ये 5 साल बाद आया, 7 साल बाद आया, ये अपने जौहर दुखा कर जाएगा। मैंने जब पहले कहानी सुनी, मैं बुरी कहानियों में भी काम किया, किसी के लिए पैसे के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, मगर जिस दिन ये कहानी सुनी मैंने, मुझे लगा ये घर घर की कहानी है। आप किसी भी कैरेक्टर को पकड़ लो, आजकल छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं घरों में। मैं एक देखता है कि एक लेडी अपने बच्चे को झूला, वो अपना झुला रही है झूला और गा रही है, मैं जट्टी यमला। मैं कहा अब ये तो रणबीर कपूर ही बनेगा। रणबीर ने जो किया है, he is really a very good actor and a very emotional person. I enjoyed every bit of my time with this unit and और क्या कहूँ मैं, अभी तो शहर में नहीं दुनिया में चर्चा है कि रानी और रॉकी और रानी की कुछ है। बहुत मज़ा आया, दोनों ने बहुत अच्छा नहीं, पिक्चर की बात कर रहा हूँ। धर्म जी आपको ऑडियंस के रिएक्शन देखने चाहिए हॉल्स में वो वाले सीन पे। मैं बाई चांस जा नहीं सका प्रीमियर में, बट मुझे लोगों की बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि धर्म जी आपने ऐसा ऐसा। मैंने यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। कुछ बाएं हाथ से करवाना हो वो भी करवा लो। और मुझे कहा करण ने कि बाजी जो आप हैं वही रहना। मैं सोचता रहा यार ये आप प्राइवेट बातें क्यों बाहर बोल रहे हो? मैं बॉबी को बताया मैंने, गुड स्टोरी एंड गॉड इज़ ग्रेट। और मुझे भी जब जब मौका मिलता है छक्का मार देता हूँ। देर से आता हूँ लेकिन आता हूँ। तो आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों। इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा, क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। मैं हकीकत हूँ, जो दिल में है मन में है वो कह देता हूँ, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुँचता कैसे इस मकाम को। इसके लिए एक शेर बोलता हूँ। मेरा बच्चा है ये, इसके तो बचपन से मेरे बच्चे भी सब जानते हैं, फैमिलीज के बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, जिद को इनकी जिद से अपनी तोड़ा मैंने। आई ना माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, मुस्कुरा कर गए लिपट एक दिन कहते हुए बेशर्म कहीं के। कुछ इस तरह का रोमांस अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं तो जो बोलते थे मुझे मालूम था, जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मुझे दिया गया करने को, इसमें दम है। तो जैसे भी मैं निभा गया, आप लोगों ने पसंद किया। आप मतलब आप भी सिर्फ कैमरा ही नहीं देखते, आप भी पिक्चरें भी देखते हैं। लव यू ऑल, आई एम हैप्पी because of my captain, my co-stars, my whole team. I am grateful to them. It was very nice time for me. ये blend हुआ ऐसे, इनको देख के मुझे लगता है हमारी लड़की को, प्यारी सी लड़की को, कि ये गोल्डन डेज का राज का मिक्सचर है। कि गोल्डन डेज में हम जब लड़की को देखते थे, ये टू बी फ्रैंक, तो लड़की देखती रहती थी और देखते देखते रह जाते थे। और आर्ट भी था, लेकिन इसमें जो आर्ट है इसमें बहुत
She's a very good, very talented girl, and I bless her. She should continue and give us some more good picture. And Ranveer, you too, okay? We need you. Okay? Love you all. Any other question if there is? Hi Ranveer. It's obvious we have to do a convo. But obvio. But obvious. Ranveer, Karan said in an interview that the Kathak performance of yours could I have... read everything that you wrote on social media, Ankita. Thank you so much. It really touched my heart. Means a lot to me. Thank you. It means a lot to me that how much happy I was. Thrice in a row I have done the film, so yeah. Wow. I think once more I have to go and see. But Karan sir said in an interview that the Kathak performance you performed in the film could have gone down south, how people would have perceived it or not. Were you scared to step on the stage at that particular moment, perform? And what if? Were you like triggered by that part that there could have been a what if to it? Well, in the initial days of rehearsal, I was a bit anxious because I've got a lot of muscle mass, babes. You know, my shoulders, chest, bicep, tricep, very big, very tight. A lot of muscle mass and density. So it was very difficult in the initial days. One had to uncondition one's body for the grace of Kathak to kind of come in. But I was getting reports that Tota sir is killing it in Kolkata. He's on it for hours a day, putting in the sweat, putting in the work. And yeah, he was doing it in Kolkata, I was doing it in Bombay, and I knew at the back of my mind that we were safe and secure because we were being choreographed by Vaibhavi ma'am, and she is an absolute stickler for absolute excellence. तो वो छोड़ती नहीं जब तक उनको जो चाहे वो मिले नहीं. So all credit to her, to the choreography team who really put us through the paces till the very last hour. And I'm so thrilled with the reaction to that moment. I've been in the cinema halls personally to witness that, and it is the most euphoric, most fulfilling and joyous feeling to see the audience's reaction to that. Alia, Samina here from Times of India. So my question is to you. Journalist play करना कैसे था? Because KRA goals सब भूल चुके थे आपको देखते वक्त. Literally, I was wondering. I hope ऐसे career होता. Second question is, आपकी शादी के आसपास ही you were wearing that bridal gown and all, you know, after that maybe. So how was that experience, and what's Ranbir Kapoor's reaction to this? To this shadi. To the journalist thing, honestly, my first day of shoot was my introduction in the film. और जहाँ पे मेरा scene होता है मिनिस्टर जी के साथ, और जो मैं अपनी बहुत ही passion के साथ बात कर रही थी उनके साथ, and I genuinely felt very comfortable doing that scene just because of how much I connected. And there is one more scene जो फिल्म में नहीं है, जहाँ पे मैं actually reporting करी थी, उसमें भी मेरे को बहुत मज़ा आया. I don't know whether I'll make a good journalist in life, but I definitely enjoyed that a lot. काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कोई journalist ऐसे sarees नहीं पहनती है, but हाँ, they're very simple sarees. But this is Karan Johar's version of that. To answer your question about Kudmai जो आपने अभी गाना देखा, yeah, actually it was in the same week. 4 days later जो मेरी शादी रियल लाइफ में हुई और फिर रियल लाइफ में हुई, बहुत ही अलग थी दोनों. माई होम वेडिंग वाज इन माई सिंपल वेरी लाइट साड़ी, बहुत ही ईजी था. मतलब मैं आई वाज रोमिंग अराउंड वेरी फ्रीली हियर. देयर वाज दिस हैवी लहंगा, सर पे मेरा एक का हैवी दुपट्टा. आई वाज डेफिनेटली वेरी ग्रेटफुल कि मेरा जो है शादी था बहुत ही सिंपल था, घर पे था, बिकॉज आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दोज थिंग्स ट्वाइस. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल यू इज, जब हम फेरे ले रहे थे, रॉकी और रानी फेरे ले रहे थे, तो ऐसे उन्होंने कुछ कहा कि नहीं फिर लड़का आगे जाता है, ऐसे नहीं लड़की फिर आगे जाती है. लाइक नहीं ऐसा मैं अभी करके आई हूँ यार, मेरे को पता है लड़की आगे जाती है. So that was one funny moment. And actually that moment, if you see in the song, जब रणवीर नीचे जाता है and he puts his head ahead like that and lets me put the वरमाला on top of him, वो actually मेरे साथ हुआ था. जो पहले रणबीर को उठा दिया था और मुझे कोई उठा नहीं रहा था, मैं देख रही थी कोई उठाओ यार मुझे. Then he only went on his knees and he went down and I put the वरमाला. So that was, तो काफी close हो गया सब कुछ. बिल्कुल.
Ranveer's reaction. He loved the film. He was very he sat Ranbir on my left and my mother on my right and my father right next to my mother, and the four of them were just responding and reacting, and just the way Ranveer said to really see a film from your loved one's perspective. And Ranbir is very technical. He doesn't say too much. He says very little, and he just very simply said it really worked for me. It touched the heart. He was laughing, and he said this film will be a big hit. Alia, just near from Indian Express towards your right at the back. Here near the camera. Recently Vaibhavi Merchant in an interview revealed that to prep for Tum Kya Mile, you visited Shah Rukh Khan for a day. I mean, you had a meeting with him. What exactly transpired, and how much did that help in making the song? Actually, I was not going to reveal this. It was my little secret. But I was very nervous. I don't know whether it was going back to shoot after a couple of months. First time doing a full, proper lip sync song after, I think, Ishq Wala Love. That kind of, that there was an inherent sort of nervousness in me, which I felt that I can do something more to do better. So I was discussing with Karan, and Karan said, why don't you call Shah Rukh up? Maybe he'll give you some tips. So I called him up to talk on the phone. I just want to understand from you because nobody lip syncs like you. And he said, "Tu ghar aaja. Suhana also was wanting to learn this. तो दोनों को साथ में हम tuition करेंगे, class करेंगे. तो तू गाना लेके आजा." And we went, and I was there for like about 2-3 hours, and Suhana और मैं पूरा एक गाना गा रहे थे. There's a whole lip sync portion which Shreya has sung beautifully, जो हम अभी release करने वाले हैं, the extended version of तुम क्या मिले. हो गया release. No, the video. Oh, the video, हाँ. The video हम release करने वाले the extended version. तो वो बहुत fast जा रहा था, तो मैं बहुत hyper हो रही थी वो fast को लेकर. But the way he broke it down, he made me download some app, and he said ये बार करो. He also had learned the song by the end of it. It just shows how generous and such a large-hearted man, and so wonderful, and just always willing to help and be there for you. And whether it helped for this film or not, I know that experience will be irreplaceable in my life. करण जी हाय. आपने अभी रणवीर सिंह की एनर्जी के बारे में बताया, एंड आपने बताया कि वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं. पहली बार आप उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा माने कि धर्मा को एक नया सुपरस्टार मिल गया है? धर्मा को क्यों, इंडस्ट्री को सुपरस्टार बहुत पहले मिल गया था. पहले रणवीर सिंह यशराज का हीरो है और हमेशा रहेगा, और वो यशराज को पहले मिल गया था. ये धर्मा की खुशकिस्मती है कि रणवीर सिंह हमारे यहाँ भी आके उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, और हम यही चाहते हैं हमारी कंपनी में, आलिया और मेरी कंपनी में, एज इन ये कि हम बार लगातार रणबीर हमारे साथ अगर काम करें तो मैं बस कहूँगा कि ज़ै नसीब. एक्चुअली मैं करेक्ट करूंगी, हम बस चाहते कि रणवीर सिंह हमेशा हर हफ्ते काम करते रहे, क्योंकि हर हफ्ते उनकी पिक्चर लगी और हर हफ्ते मैं टिकट खरीद के जाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस टैलेंटेड बॉय. प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू. अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे मियाओ. आप भी जानते हैं, आप भी गाइए. And sir, that is true testament to the legacy of Dharma, and I'm only too proud to be a small part of it. Do you know, for the first time in the history of Dharma, our logo is only 5 seconds because of length. So it goes, and that's it. If you notice, yes, it's not, because I was so paranoid about the length of the film that I was like, sab logos काट दो. So they said, no, काट नहीं सकते, मेरा title भी निकाल दो. So in every other film you hear the whole chorus, in mine is cut. It is literally that much. So I'm so sorry that we had to do this for our film, but I felt if I am the only person who can do it and not upset anybody, because everybody else would want the whole chorus, but I said, but if I cut it, nobody will feel bad. Tota? शुक्र है लोगो काटा सर, लोगों को नहीं काटा. Thank you very much. हाँ, सीक्वल की तैयारी अभी वो राज को राज ही रहने देते हैं. Weeks actually. We had a break between shoots schedules, so we had some time. Best way to utilize it is to rehearse. Rehearsal is the name of the game
for any performer. But he at one point, sorry to interject, but he called me at one point and he says, he's like, Karan, I don't think I have a bone of Kathak in my body. Like, I really don't think I'm being able to do this. He was really initially struggling, and that's why he worked extra hard. It is because of extra muscle mass. Yes. Yeah. Like I said, it's... so yeah, oftentimes, due to scheduling, us performers, we don't really get the ideal amount of time that one would like to rehearse. There's no end to how much you can rehearse. But here I had the opportunity and I took it with both hands. Tell me, you had a couple of films that didn't work just before this. So was that weighing on you that this has to work? Ma'am, I don't dwell too much with failure or success. I'm grateful no matter what. The fact that I get to go to a film set and perform and collaborate with fine artists, that for me is the cake itself. And the fact that my character and the movie is being loved is the icing on the cake. So I'm grateful no matter what. Thank you. Dharamji, one last question to Dharamji. Dharamji, good afternoon. Good afternoon. Which is your favorite scene in the film? I love everything in the picture because the first time I saw the locales and the songs, you know, हमारे वक्त में गाने में हम निकल जाते थे. ऐसा visuals and ऐसा कहाँ से select किया इन लोगों ने और कैसे picturize किया, it's something superb. और बाकी साथ में देखिए, इमोशन तो हर इंसान की ज़िंदगी में बगैर इमोशन के कुछ नहीं. वो झूठ बोलते हैं कि उदासी नहीं आती, दुख नहीं आते, और दुख हमेशा आपको पिन पॉइंट करता है. अगर वो नहीं है, हम कितना नाच लें गा लें, बात नहीं बनती. और ये कहानी इसलिए मैंने कहा घर घर की लगती है मुझे. जितना मैंने जब सुना पूरा मैंने और जो देखा तो और भी खूबसूरत लगा. और ही इज़ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर. जहाँ इसको देखा था कैमरा किस पे ले जाना है तो ले जाता था. धर्म जी, also I want to know, ये आपकी फिल्म जया जी के साथ बहुत सालों बाद थी और जया जी ने अपना सफर आपके साथ शुरू किया था. और आप उनको अभी भी गुड्डी बुलाते हैं सेट पे? गुड्डी बुलाता हूँ. शी उनका फोटो सेशन घर पे ही हुआ था हमारे. और शी वाज माय फैन. शी यूज्ड टू से, she was telling me the dialogues even this, that. Goody is a fine actress. And घर का आना जाना उनके साथ अब भी जब भी मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है. वो गुड्डी ही है मेरी. और शबाना जी के साथ भी बहुत अच्छा लगा काम करके. इनके साथ तो it is good. I enjoyed every bit of my, जो कुछ मुझे जितना मिला मैं उसको एंजॉय किया. कोई ऐसा नहीं कि ये खामखा है. इवन अगर फुल स्टॉप है या कॉमा है या पूरा पंक्चुएशन है, वो बहुत सही है. एंड आई रियली एंजॉयड इट. ये बहुत रेयर होता है. ये खामखा की फुटेज क्यों, ये पासिंग क्यों है. और फिर मेरे लिए एक्टिंग रिएक्शन है. Can anyone else play a Delhi boy better than you? I don't know. That's not for me to say. But yeah, I'm glad that amongst various Delhi boys that I've played, I'm able to find something different to offer with every character. So that's very fulfilling and heartening to learn from the audience's reaction to the film and the character and the performance. And your Kathak dance was outstanding. Thank you, What madam. was Deepika's reaction to that? She loved it. Actually, it was one of the most memorable and fulfilling movie watching experiences of my life. I took her on a Saturday night to watch Rocky or Rani ki Prem Kahaani. It was just the two of us sitting in the last row on recliners. And I had seen the film already. So I was really just there for her reaction. And she was laughing. She was crying. She was clapping, whistling, and oftentimes turning to me and saying, oh. So yeah, I had the best and most fulfilling experience sitting with her and watching it. She's very,
very proud of me, and I'm very happy about that.